this whole problem that people say, WhatsApp में मेरा number block हो जाता है, ठीक है? So I want to clear all the doubts, the myths, the misconceptions that people have about why the numbers get blocked to begin with, right? And then once you've understood why the number gets blocked, then बस उसको नहीं करना है, जो नंबर ब्लॉक हो रहा है वो कारण वो बंद करना है, एंड देन यू कैन हम्म। सक्सेसफुली यूज WhatsApp as a marketing tool, and I will go one step further to say as a secondary marketing tool. ठीक है? I'll clarify what I mean by secondary marketing tool. तो पहले चीज तो ये है कि WhatsApp and email and all are communication tools that then became marketing tools. ठीक है? So one concept that people, at least in India, have a bit of a struggle to understand it is the concept of spam. Now, what in the basic simple form, what is spam? Spam is something that sending a message that is unsolicited, meaning that मैंने ये मांगा नहीं और फिर भी आपने मुझे ये मैसेज इंफॉर्मेशन भेज दिया, ठीक है? तो द सिंपल थिंग इज टू नॉट सेंड स्पैम, बट वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, बट व्हाट इज स्पैम, बट मैंने स्पैम किया नहीं किया, मैंने इंटेंशन, तो विल क्लैरिफाई ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है? सो नाउ व्हाट्सएप has is run by Meta company, uh, and so therefore they have given an option the moment a message comes to their WhatsApp from an unknown number which is not saved on their phone, वहां पे WhatsApp forcibly presents an option with two buttons, one of saying okay and the other one saying block. And when you click on block over there, it gives further options over there, which says report this business, this is spam, this is abuse, this is यस यस। I never signed up for this, blah blah blah. बहुत सारे options मिल जाता है. And then they click a button called report, which then this report goes to the WhatsApp server, and there is a automatic server software that's capturing all these reports all the time. And of course, if let's say one of you report my number to WhatsApp, maybe no action will be taken by WhatsApp. But let's say I'm doing a bulk WhatsApp, which I will show you the tool how to send 100-200 number डाल के फिर एक bulk message भेज दो सबको. Now in there, if say 10 people within 1 hour are reporting that this is a spam, that's too many in too short a period of time, and then instantly the number gets banned. ठीक है? So WhatsApp ने what they have done is they've given the sword, तलवार जो है वो यूजर के हाथ में दिया है कि भाई आप डिसाइड करो स्पैम क्या है, स्पैम नहीं है, वो आपके हाथ में ना. मेनी पीपल माइट बी लुकिंग एट इट, ये क्या है, बकवास है यार, मैंने कुछ मांगा ही नहीं है सब, दे विल जस्ट डिलीट इट एंड गो टू द नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट मैसेज. कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग रिपोर्ट करेंगे, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट. तो नाउ द क्वेश्चन इज, how did you get the number to which you are sending the message? People say that मैंने वो डेटाबेस खरीदा है, मैंने कुछ 3,000 रुपया दिया, मेरे को लाख नंबर्स ऑफ डेटाबेस है मेरे पास, सब एवरीथिंग है. उसका कुछ फायदा नहीं, बिकॉज वो डेटाबेस लेके आप क्या करोगे? दे नेवर आस्क फॉर व्हाट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, फिर भी आप उसको जबरदस्ती ये मैसेजेस भेज रहे हैं. सो देन योर नंबर गेट्स ब्लॉक्ड. नाउ how to get a database of names and numbers to do secondary marketing. So you have to do primary marketing for that. So for example, there are many mechanisms of getting numbers into your database. For example, old traditional businesses are एक सेमिनार कंडक्ट करो, लोगों को वहां पे एडवर्टाइज करो, लोग आते हैं, you go through a networking event, you exchange cards, एग्जीबिशन का में एक स्टॉल होल्ड कर दिया. These are all traditional marketing systems that were there, that were offline, right? आप physically गए कहीं पे, कार्ड एक्सचेंज हुआ है, and you have collected people's information. You can always do a reference by telling them, भाई आपने हमारा स्टॉल विजिट किया था फलाना फलाना एग्जीबिशन में, so we are interested to tell you about this new product that we are launching फलाना फलाना.
Now that person who receives that message will say, हाँ मैंने वो गया 2 महीने पहले मैंने वो एग्जीबिशन में गया था, या आई वेंट फॉर दिस नेटवर्किंग इवेंट सो आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि ऐसा ऐसा हुआ. So in such scenarios, of course, the person will not go ahead and report your number. I run Facebook ads, right? And I say that, look, we are offering this free AI generated website. Get in touch with me for more information. And then they WhatsApp me and they chat with me, and मैं उनका number save करते जाता हूँ. Now, when I invite them for something that is related to AI generated website, so they know, na, even though they are not saved my number, I saved their number, but they are not saved my number. But at least they remember, नहीं यार, कल ही तो बात हुआ था या लास्ट वीक की बात हुआ था कि उसको AI जनरेटेड वेबसाइट का वो कुछ मेरे को लिंक भेजने वाला है, शेड्यूल अ कॉल विथ मी एंड ऑल दैट स्टफ. सो दे विल नॉट ब्लॉक मी बिकॉज दे नो कि अभी उन्होंने वो मांगा है उसका. So these are the proper ways, channels to get data. People come back and tell me, ऋषि ठीक है लेकिन यार फेसबुक ऐड मैंने चलाया, मैंने 5,000 रुपये लगा दिया ऐड पे, अब मुझे सिर्फ यार 40 नंबर मिल गया, तो बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को यार. कहाँ 3,000 मैंने 1 लाख का डेटाबेस खरीदा और कहाँ 5,000 का ऐड खर्चा किया और सिर्फ 40-50 लोगों का नाम और नंबर मेरे को आ गया. बट दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. That is the reality. You can do some performance marketing and say that ठीक है, I in 5,000 rupees I will get 150 number. आपका 40-50 की जगह you can go 3 times that database size. That is by optimizing the ad campaign, hire an expert and get it done. But the point is that this is the way to collect the information so that when you send them messages, they feel, they remember why you have to them. If you got their name and number, then you can even, our software will personalize it. एक message जाएगा, but instead of just saying hi, it will say hi Rishi, hi Tripti, hi Sumit, hi Jinal, hi Tahir. ऐसे अलग-अलग message के लिए अलग-अलग नाम भी चला जाएगा. So our software we will be demoing in a bit, 5 minutes. But before I start the demo, I just want to quickly get a ask you if you have any questions about this banning wala problem, number blocking wala problem. Any questions on that? Rishi, I just have one small question. Yes, For sir. example, if we have collected the data using the primary marketing techniques, Hmm. for example, we are generating the data with help of some lead generation form at Facebook or Instagram or Meta, whatever. Yes. And now we are broadcasting these messages, Yes. and few people still report it. The probability is low, but as a worst case scenario, I'm just thinking that if few people block it or report it and your number still gets blocked, is there any way to put this into grievance or resolution with the WhatsApp team? एक तो आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं. Number Okay. one. Okay. And I have sent thousands of messages. Okay. Right? Over the last so many years, maybe I've crossed 1 lakh messages also. But आज तक मेरे साथ ये हुआ नहीं. जब ब्लॉक होता है, मैंने सुना है, they usually go and say support, please activate my account, and then within 24 hours वो reactivate हो जाता है. Okay. But other than that, there's no phone number you can call or कोई फेसबुक का ऑफिस में जाके वो अप्लाई नहीं कर सकते. इट इज ऑनलाइन ओनली और वो नॉर्मली रीएक्टिवेट हो जाता है. ऐसा Okay. नहीं कि डजंट गेट एक्टिव, बट आप 1-2 दिन के लिए आपका नंबर डाउन है, Okay. which is literally like a fish out of water. मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसका टाइप. आई नो बिकॉज व्हाट्सएप इज वेरी वेरी critical. Without WhatsApp, people say क्या हो गया तू WhatsApp तेरा नहीं लग रहा है क्या, all that kind of issue will come up. So it becomes a very very big problem. It's like आपका फोन डाउन है. Right. Just imagine phone ही down है तो फिर trying to reach you for the last 2-3 days. So that is my take is that ऐसा एक तो होगा नहीं, एंड नंबर 2 अगर होगा तो फिर उस पर 24-48 आवर्स पे वो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है. ऐसा नहीं कि अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होता है. अच्छा, बार बार आप स्पैम करते जा रहे हैं, अब बार बार आपका नंबर ब्लॉक हो रहा है, तो फिर शायद व्हाट्सएप परमानेंटली बैन कर देगा. इट्स लाइक 1-2 नंबर से वो रिपोर्ट नहीं होता है. इट टेक्स एटलीस्ट 10-15-20 लोग रिपोर्ट करना चाहिए, वो भी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Okay. So by any chance you also have a kind of a process flow that
this is the primary message, like how you have been, you are a proof of case that you have been sending 1 lakh plus messages and your number has not blocked. So I'm sure you are doing something right. So that doing right, if you can give us and spoon feed us, will be more, I mean. So one is I personalize it. So some Hmm. many times you'll see that my messages, they will, if I'm sending it out to a group of people, Hmm. then it'll go with hi Trupti, hi Sumit, hi Anil, like that. If I'm sending it to groups, that is just hi, of course. Uh, the other aspect is that Like I give, initiating conversation, giving some reference, or maybe like how you are part of many groups which are business networking groups. So not so all of them have met or interacted before, but right, to right. initiate the conversation, you must be using some conversation starter. Sure, sure. I do that. So my strategies are a little different. I try to get people to come and engage with me rather than to, let's say, sell them something directly. Okay. Of course, we're all here to do business. There's no question about that. मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हैं, सब लोग बेचने के लिए आए हैं, कुछ तो प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है. बट मेरा जो टेक है कि पहले एंगेजमेंट करो, let the person get to know you, they also get to know you. So there is an interactions, and then just interactions. Of course, people are not interested. They want to see कि यार इसमें कुछ वैल्यू है, मेरा उसको वेबिनार अटेंड करके या उसको जूम मीटिंग में अटेंड करे तो what am I going to take back from it? So I try and construct my invitations for engagement and sharing some knowledge where they can feel कि it may help their business or whatever. Like मेरा जो कंपनी का नाम which is WebDudes is boost your business online. तो मतलब they know कि यार यहाँ पे कुछ business का बढ़ाने का chances है, so let's just join this guy's program. And then I like put my titles which is very simple to understand. Like for example, learn how to promote your business in using WhatsApp without your number getting blocked. तो many people का वही challenge है ना, तो वो challenge को आप उसको knowledge sharing में free webinar में invite करो. If they get it, well and good. If they don't get it, ठीक है. So this is another strategy I do, that share the knowledge with them, and it should be addressing a pain point of this. So if I'm able to address the pain point and solve their problem, great, fantastic. Today I had a customer of mine. He called me in the morning. Sir, Rishi, कैसे हैं आप? And I was like, yeah, great, great. He had bought some service from me about 4-5 years back. तो 4-5 साल तो ऑलरेडी हो चुका है उसका, सर्विस तो कब का खत्म हो गया. He said you are become world famous. I said क्या बात कर रहे हैं, वर्ल्ड फेमस मैं कहाँ हो गया भाई? नहीं, मैं आईआईटी गया, वहां पे किसी ने बताया कि आपका ये बल्क मैसेज ऐप का कुछ तो टूल है और डेफिनेटली योर म्यूजिक. I said ऋषि तो मुझे पता है, वो मेरा आई बॉट सर्विस फ्रॉम, हाउ कम आई डोंट नो अबाउट इट. नाउ दैट जेंटलमैन हु एक्चुअली केम एंड अटेंडेड वन ऑफ दिस वेबिनार, उसने ट्राई किया, उसको फायदा मिला. ही सेड यार ये यूज करो, बल्क व्हाट्सएप में चल रहा है, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली यूजिंग इट. एंड आई डिडंट रिमेंबर, because like this now many people in the case of Trupti, she is sharing a video. बाकी सब यहाँ पे मेरे को फिर चेहरा देख ही नहीं रहा. आई डोंट नो हु इज अटेंडिंग माय प्रोग्राम, नॉट अटेंडिंग माय प्रोग्राम. तो मैं देखा भी कस्टमर का फेस लिंक्डइन में, बोला यार मैंने कभी उसको देखा भी नहीं, पहचानता भी नहीं. देन व्हेन आई रजिस्टर्ड एंड आई सी लाइक ओ ही इज ऑलरेडी कस्टमर ऑफ माइन, उसने ऑलरेडी बल्क मैसेज ले लिया मेरे से. सो ऐसा भी होता है. सो फोकस ऑन गिविंग सम वैल्यू, some pain point you must address, right? And offer engagement, free webinar kar lo. This I believe is a good foot to the door strategy to Yes. then sell one sir. आज मैं अगर किसी को बल्क मैसेज ऐप बेच रहा हूँ, ऐप कॉस्ट इज 10 पैसे पर मैसेज. ऐसा नहीं कि मैं लाखों का इन्वेस्ट कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी इजी स्टेप, इट्स अ यूजफुल टूल, लोगों फायदा होगा उसका. सो ट्राई, इवन इफ यू हैव लाइक 4-5 प्रोडक्ट्स, give one small free trial, some chota mota kuch to, without having to lose out on investments. But knowledge sharing and address pain points. These are my few things that come to my mind right now when you ask me. Okay.